So we are live, I suppose. Are we live? Can you hear me? एक बार नेटवर्क चेंज करता हूँ. Yeah. Yeah. So am I audible? So am I audible? Chalo, chalo, we'll start. Let's not waste our time. Can you hear me? Can you hear me? Voice सब ठीक है ना? Is the voice clear? Voice clear? Yes, yes, yes. So, yes, yes, yes. चलो, we'll start. Good morning. Low voice आ रहा है? I don't think so. अरे यार प्लीज डू कम ऑन टाइम. इट्स नॉट एट 11 o'clock. इट इज एट. अच्छा, आज कुछ एग्जाम है बोले. टुडे डू यू हैव एनी एग्जामिनेशन? आई वाज टोल्ड दैट देयर इज एन एग्जाम टुडे. कोई एग्जाम है क्या? Someone told me that there is an exam. चलो, we'll proceed, sir. आज कुछ एग्जाम बोले थे बच्चे. आई डोंट नो. अरे नो वन इज कमेंटिंग. So how is your preparation going on? सब लोग बताइए. Okay. In the last class, we started discussing VC cycle. Correct? So we have represented it on TS diagram. Something like this. It is a standard VC cycle. Okay. 1 to 2, 2 to 3. एक सेकंड प्लीज, इसको बंद कर देंगे. राइट, सही है. ओके, करेक्ट. नाउ this is 3 to 4 and 4 to 1. Can you tell me what is 1? It is inlet to the compressor or exit of evaporator. 2 is exit of a compressor or inlet to the condenser. 3 is exit of a condenser or inlet to the expansion device. 4 is exit of expansion device or inlet to the evaporator. These things we have seen in the last class. These things we have seen in the last class. ठीक है sir. Now I want to represent the same cycle on pressure enthalpy diagram. So the diagram is something like this. Again, देखो एक बार. This is the liquid state. This is saturated liquid curve. This is critical point. It is the saturated. See, I'm not giving all the details because this is the crash course. समझ गए ना? मतलब whatever is important for us that I'm giving. And this is a superheated region. Okay. Now, what is 1 to 2, sir? 1 to 2 is compression. 1 to 2 is compression. And you know, during compression,
you are giving input to the working fluid. So therefore, when you are giving input to the working fluid, the enthalpy of the fluid will increase. I repeat, sirs, the fluid enthalpy will increase. The enthalpy of the fluid will increase. At the same time, you are compressing, so pressure will increase. So if I show on pH diagram, the enthalpy is increasing, so it moves to the right, and the pressure is increasing, so it will move up and to the right. Absolutely. Dekho, where is one? It is on the saturated vapor curve. This is one. So during compression, what is happening, sir? The pressure is increasing and the enthalpy is also increasing. From saturated vapor state, it will move to superheated state. So this is my compression, sir. ये हो रहा है आपका compression which is occurring in my compressor. Exactly. Now what is 2 to 3? 2 to 3 is a constant pressure process. So how do I show constant pressure process? This is pressure is on y-axis, therefore it will be horizontal. So from superheated state, it is entering the saturated liquid state. So it is a constant pressure process, the same process I'm showing. So therefore it is 2 to 3. And you know, during this process, heat is rejected in a condenser. During this process, heat is rejected in a condenser. ठीक है sir. What is 3 to 4? It is throttling. But here I have shown by dotted lines. Should I show here also by dotted lines? My dear students, here I have shown by dotted lines. Why have you shown by dotted lines? आप क्यों dotted lines से show किए? क्योंकि मुझे path पता नहीं था. So whenever you do not know the path, you show by dotted lines. But यहाँ पे 3 to 4, what is remaining constant? 3 to 4 is throttling. So enthalpy is remaining constant. जब enthalpy constant है, तो definitely on this axis there is enthalpy. Complete process पे क्या constant है sir? Throughout this 3 to 4 enthalpy is constant. Means every point should pass through the constant enthalpy line. इसका मतलब आपको path पता है. तो all points should pass through same enthalpy line, same enthalpy line, same enthalpy line. So every point is known to me same enthalpy line. So this is my 3 to 4, same enthalpy line, same enthalpy line. So confuse mat hona. Here I have shown with broken lines because I do not know the path. But 3 to 4 is isenthalpic. 3 to 4 is आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा सर ताकि आपको वीसी साइकिल के सारी डिटेल्स मिल जाए. ओके. 3-2 इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा कॉन्सेप्ट देते हुए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑल क्वेश्चंस आई ट्राई टू डू सो दैट आपको 2.5 आवर्स में कंप्लीट मिल जाएगा सर इन 2.5 आवर्स यू विल गेट एवरीथिंग मैं आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम आल्सो सो व्हाई we have shown by continuous line. I know that 3 to 4 is irreversible process. ये मत सोचना कि irreversible हमेशा हम dotted line से ही शो करते हैं. So most of the times irreversible का path पता नहीं रहता है. That's why we show by broken lines. But here all the points must pass through the same enthalpy क्योंकि throttling is isenthalpic. जब enthalpy constant है तो 3 से लेकर 4 तक every point should pass through same enthalpy. So it means it should be a vertical line. That's why I'm showing by a continuous line. And what is 4 to 1? Constant pressure heat absorption. So this is my constant pressure. This is my storage. From the storage, the heat is absorbed. And we also called this as refrigeration effect, sir. This is refrigeration effect. Is it clear, my dear students? यहाँ तक सबको समझ में आया सर? मित्रों, hope this is clear. Now the same thing I'll show on HS diagram. This is nothing but standard or simple VC cycle or saturated VC cycle. Let me show the same thing on HS diagram. एक बार देखते हैं सर. I'm sorry. This is my HS diagram. अब देखो, which we also call it as Mollier diagram. Mollier diagram. Mollier diagram is a HS diagram. चलो, it will be something like this. इधर देखो. This is saturated liquid curve, critical point, saturated vapor, wet region, superheated region, ये सब है. And you know very well what is 1 to 2 processor. 1 to 2 में क्या हो रहा है सर? देखो एक बार. What is 1 to 2 sir? It is compression, reversible adiabatic compression. इसका मतलब क्या है सर? Whenever expansion device there is no work. Why didn't you show by? Excellent sir. जगदीश ने पूछा है, जगदीश ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर. सर, in throttling
there is no work, because you are not generally in expansion, you get some work, but in throttling you are not getting any work. So instead of throttling, why can't we go for isentropic expansion, so that kuch work milega isentropic expansion mein, so that kuch work milega, so you will get some work, so that work I can use to run the compressor. मतलब देखो, एक्सपेंशन में अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो आई विल यूज दैट वर्क इन रनिंग द कंप्रेसर, सो दैट नेट कंप्रेशन वर्क मुझे कम मिलेगा. दैट इज इज जेन्युइन डाउट. अच्छा डाउट है सर जगदीश का. हैव यू अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू हैव यू अंडरस्टूड द डाउट ऑफ जगदीश? जगदीश सेज, sir, in throttling, we are not getting any work. Correct, agreed. Throttling is an irreversible process where there is no work transfer, where there is no heat transfer. So, वो पूछ रहा है, sir, why do you go for throttling? It is an expansion, na? During expansion, you get some work. So, utilize that expansion work so that net compression work कम हो जाएगा. अरे यार, आपको अगर कुछ मिल रहा है, देखो, it's something like this. मेरे पास कुछ स्क्रैप है. सो देखो, ओल्ड मोटर खराब हो गया, ओल्ड बोर पंप खराब हुआ, तो नया खरीद रहा हूं सर मैं. तो अब देखो ध्यान से सुनो, ओल्ड मोटर खरीद रहा हूं, तो नया आई एम परचेसिंग न्यू वन इज 40,000. तो इफ आई सेल ओल्ड वन फॉर स्क्रैप, आई मे बी गेटिंग सम 2,000 रुपीज. सो न्यू वन इज 40,000, ओल्ड इज 2,000, स्क्रैप के लिए 2,000, सो नेट रिक्वायर्ड विल बी 38,000. His logic is correct, but actually what is happening, I'll tell you. It's something like this, my dear students. It's something like this. You are getting 2,000 rupees for your scrap, but now no one is purchasing that scrap. You have to go somewhere and sell that scrap, and for going there you have to spend some 2,000 rupees. आपका scrap value is 2,000 rupees and you have to spend around 2,000 rupees. I'm not saying exactly. Will it be economical? Will it be economical? That's why, even though, मेरे प्यारे दोस्तों, the work is given by minus VDP, where V is, because this is the open system work. It's because expansion, compression, all these are open system devices. So therefore, this work, which fluid is expanding, sir? 3 से instead of throttling अगर हम expand कर रहे हैं, ये कौन सा fluid, sir? Liquid. लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है. व्हेन द लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज स्मॉल, द एक्सपेंशन वर्क दैट यू आर गेटिंग इज वेरी स्मॉल. तो इतना बड़ा एक्सपेंडर, कॉस्टली एक्सपेंडर करने से द कॉस्ट इज नॉट जस्टिफाइंग, सर. You are getting some expansion work, but as the liquid is expanding, the expansion work will be less. Thereby, the usage of that expander is, the cost is not justifying. That's why we don't use expander. Hope you understood, my dear students. क्या ये बात सबको समझ में आया, जगदीश बाबू? कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे सर, नो हंगामा, नो वो ये कुछ नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट. हैव यू अंडरस्टूड मिस्टर जगदीश? यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, तो मैं आंसर दिया. यस, वंडरफुल सर. तो प्लीज नोट डाउन, द कॉस्ट इज नॉट जस्टिफाइंग, सर. बहुत बढ़िया. कुछ पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस ऑन एचएस डायग्राम. व्हाट इज 1 to 2? देखो सर, 1 to 2 is compression. During compression, it is reversible adiabatic compression. In reversible adiabatic, entropy is remaining constant. But as you are compressing, the pressure is increasing, enthalpy is increasing. Why the enthalpy is increasing? हम fluid को input दे रहे हैं, sir. When you are supplying energy to the fluid, its enthalpy is increasing. That's why the enthalpy is increasing. So how should I show? It is isentropic. देखो एक बार. Yes, this is one. Saturated vapor is being compressed to 2. It is compression. And now you tell me what is 2 to 3. And 2 to 3 is constant pressure heat rejection. मेरे प्यारे दोस्तों, how are constant pressure lines on Mollier diagram? Superheated में they are curved, and in wet region they are straight line. Sir, समझ में नहीं आया. This I taught in thermodynamics. इधर देखो, TDS is equal to dH minus VDP, and I want to draw constant pressure line. So when pressure is constant, change in pressure is 0. So therefore, TDS is equal to DH, or DH by DS is equal to T. What is DH by DS? Slope. DH by DS is slope. The slope of constant pressure line is temperature. तो सुपरहीटेड में देखो, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन वेट रीजन में ड्यूरिंग फेज चेंज द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द वेट रीजन ड्यूरिंग फेज चेंज, द स्लोप विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट मींस स्ट्रेट लाइन. हैव यू फॉलोड सर? इट्स ओके. देयरफॉर इसमें क्या होता है ना, कर्व आता है और यहां पे
एक स्ट्रेट लाइन आता है सर, वंडरफुल सर। दिस इज, एक सेकेंड, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मेरे प्यारे दोस्तों, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। दिस इज माई, ये कर्व है सर, दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन 2 to 3, एंड वेयर आर यू स्टॉपिंग सर, आप कहां रुक रहे सर? You are stopping on saturated liquid curve. Yes, this is a saturated liquid curve. And what is 3 to 4? 3 to 4 is throttling. Throttling में क्या कांस्टेंट होता है सर? What is 3 to 4? मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिखूंगा सर, एक बार डायग्राम को अच्छा करवाऊंगा, डोंट वरी, एक सेकंड। Yes, this is 3. And 3 to 4 is throttling. Throttling is an irreversible process. So therefore entropy will increase, but enthalpy remains constant. Enthalpy constant means horizontal line. Entropy increases. So this is my throttling, sirs. This is my throttling. This is कहाँ गए रे? क्या हो रहा है हमें? 3 to 4 is, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, आई विल रिमूव दिस। वंडरफुल सर, वंडरफुल, आराम से, टेंशन नहीं लेने का सर। आई विल शो यू वेरी क्लियरली, आई विल शो यू वेरी क्लियरली। देखो, this is 1 and this is 2, and this is 3 to 4 throttling, and what is 4 to 1? 4 to 1 is, 4 to 1 is constant pressure heat absorption. Therefore now 4 to 1 in wet region it will be a straight line, sir. This is a constant wet region में straight line होता है constant pressure, और superheated में curve होता है. This is the representation of vapor compression cycle on HS diagram. Is the diagram clear, sir? क्या ये डायग्राम क्लियर है सर सभी को? प्लीज टेल मी, इज द डायग्राम क्लियर? देखो, isentropic compression, constant pressure, this is occurring compressor, condenser, expansion device, and then expansion device, and this is in evaporator. This is occurring in 4 to 1 in evaporator, 1 to 2 is occurring in compressor, and 2 to 3 is occurring in condenser, and 3 to 4 is occurring in expansion device. Is it clear, sir? Is the concept clear, sir? Yes or no? If you say yes, then I'll proceed, sir. Yes, समझ में आया sir. Because he may be asking you to represent the cycle on HS diagram also. Everyone knows how to represent on TS and PH diagram, but you should know how to represent on HS diagram. ठीक है sir. अब एक बार याद दिला देंगे, बहुत important points. Let us discuss. देखो sir, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देख लेंगे, इधर देखो। Generally, it will be easy for me if I represent on this diagram. एक बार देखो, what is this process, sir? Isentrop, ये किसमें हो रहा है sir? This is occurring in compressor. So what is the work input to the compressor? Yesterday I have derived H2 minus H1. Then heat rejection. देखो, what is the heat rejection, sir? Heat rejection is starting at 2, ending at 3. Therefore, it is H2 minus H3. Actually, it will be H3 minus H2, but I took negative. Negative of heat means heat rejection. Okay. And for 3 to 4, what is happening, sir? And H3 is equal to H4 because 3 to 4 is throttling. And finally, 4 to 1. From the storage, heat is absorbed. And this is my refrigeration effect. So therefore, refrigeration effect, which is heat absorption, is equal to anyone. So absorption is starting at 4 and ending at 1. So therefore it is H1 minus H4. And please don't write CPT, CPT. ये सब मत लिखना सर. वेरी गुड. थोड़ा बात करेंगे सर क्लास के बाद. पीडीएफ ऑलरेडी आई शेयर्ड विद द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट विल बी शेयरिंग विद यू. ऑलरेडी मैं पूरा पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ शेयर किया. सो अब देखिए सर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सीओपी? मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सीओपी? बताओ सर. सीओपी इज इक्वल टू refrigeration effect. Refrigeration effect is H1 minus H4 by work input. What is the work input? H2 minus H1. This is my equation. Absolutely fine. अब देखो सर, आपको टेबल दिया जाएगा सर. You will be given a table. तो टेबल में what values are given? Please note down that condensation is nothing but phase change. In the table, the higher temperature will be given. Please note down that in the table all are saturation values. मतलब ये टेम्परेचर नहीं देता है सर वो. Please note down that higher temperature means this temperature. सर आप गलत पढ़ा रहे हैं. हाई टेम्परेचर तो ये है. देखो सर,
कंडेंसेशन कहां पे शुरू हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मींस फेस चेंज। कंडेंसेशन मींस फेस चेंज। तो फेस चेंज तो यहां पे शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। सो दिस इज द कंडेंसिंग टेम्परेचर। द हाई टेम्परेचर दैट विल बी गिवन इन टेबल इज दिस टेम्परेचर। ओके, the lower temperature is evaporator temperature, ये temperature दिया। Please listen carefully, condensation phase change is starting at this point, ending at this point, ठीक है sir? And please note on that what is point 2. Point 2 is either exit of compressor or inlet to the condenser. Point 3 is exit of condenser or inlet to the expansion valve. Point 4 is exit of expansion device or entrance to the evaporator. One is inlet to the compressor or exit of this evaporator. So what is H1, sir? It is the enthalpy at the beginning of compression, or it is the enthalpy at the exit of evaporator. So what is H4, sir? H4 is enthalpy at the exit of expansion device or enthalpy at the inlet to the evaporator. And what is H2? Enthalpy at the exit of compressor, or it is at the exit of entrance to the condenser. ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। और एक बात है सर, थोड़ा बहुत थर्मो रिफ्रेश करेंगे सर। अप टू दिस इज इट क्लियर? लेट अस रिफ्रेश थर्मोडायनेमिक्स। एक बार देखना सर, तो क्या है सर, सपोज मेरे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा है सर, मान लो दिस इज ऑल्सो वीसी साइकिल सर। मेरा साइकिल मान लो इट इज समथिंग लाइक दिस। Yes. This also, but this is not a simple VC cycle. For simple VC cycle, your point 1, which is inlet to the compressor, should be on the saturated vapor curve. तो मेरा point यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है. Therefore, please note on that it's not a simple VC cycle, but this cycle is also possible. Okay, मेरे प्यारे दोस्तों, whenever the fluid is in wet region, ध्यान से सुनिएगा. Let's take entropy here. This entropy we call it as Sg. G का मतलब saturated vapor, and this entropy we call it as Sf. आपके टेबल में, when the table is given, he will give you lower temperature is also known as evaporator temperature. इस temperature पे Sf and Sg will be given. Very good sir. Similarly, इस temperature पे, this is the higher temperature, this is Sg, but please confuse मत होना. Whenever I say Sg and Sf, it should be at a particular temperature and pressure. इसका मतलब इस टेम्परेचर पे एक Sg होगा, एक Sf होगा, इस टेम्परेचर पे एक Sg होगा, एक Sf होगा. तो मेरे प्यारे दोस्तों, can I write S2 is equal to Sg at condenser temperature? लिख सकते या नहीं रे बाबा? S2 is equal to, अगर आपको S2 चाहिए, ये तो सैचुरेटेड वेपर है, therefore it is Sg. But Sg at what temperature? It is the condensing temperature. Can you tell me what is this sir? ये क्या है सर? It is Sg. ये कहाँ है? It is the saturated vapor entropy at the evaporator temperature. It is the saturated liquid entropy at evaporator temperature. It is the saturated liquid entropy. It is the saturated vapor. And what is S3 sir? S3 is, it is SF at the condenser temperature. ये सब क्लैरिटी है. Whenever the point is in wet region, जब भी हमारा point wet region में होता है, तो इसका एंट्रोपी अगर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली ये एंट्रोपी SF से ज्यादा है, SG से कम है. I repeat sir, this SF से ज्यादा है, SG से कम है. In thermodynamics we have studied, whenever it is in wet region, कैसे लिखेंगे सर? I'll write this as SF plus X into Sg minus Sf. Sir, we have not understood. I am there to explain now. This X is known as dryness fraction, or it is also known as quality of mixture. It is also known as quality of mixture. What is the meaning of dryness fraction? यहाँ पे क्या क्या है बताओ sir? What do you have? So it is in wet region. So you have a liquid, you have a vapor. So the dryness fraction at 1. So x1, so यहाँ पे x1 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस टेम्परेचर पे. तो S1 is, if you want the entropy here, it will be SF, that is saturated liquid entropy, plus X is the dryness fraction. Dryness fraction का मतलब इस रीजन में कितना वेपर है और टोटल मिक्सचर कितना है. Therefore यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है, तो लिक्विड प्लस वेपर का टोटल मिक्सचर यहाँ पे वेपर है. दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन सर. वेरी गुड. सिमिलरली इफ यू वांट द एंथैल्पी एट दिस पॉइंट, मित्रों अगर यहां का एंथैल्पी चाहिए तो क्या करेंगे सर?
It will be HF plus X into Hg minus HF. What does it mean? HF is enthalpy at this point. Hg is enthalpy at this point. H1 is enthalpy at this point. H1 X1 is the dryness fraction at this point. यहां तक सबको समझ में आया सर? Please tell me, is it clear, sir? Please बताइए. If this is clear, I'll proceed, sir. Similarly, how can I write the enthalpy at point 4? मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए. It is in wet region, तो क्या करेंगे? HF plus X4. यहाँ काट रहे हैं. Please see the difference between this and this. So when you are writing the enthalpy here, I should take the dryness fraction there only. It will be X1. अगर यहाँ का चाहिए, it will be X1, sir. So if you want the enthalpy here, H4 is equal to HF. What is HF? Enthalpy here. What is Hg? Enthalpy here. Plus X4 into Hg minus HF. Hope you understood. Very good. And you also know what is the relationship between the enthalpy at point 3 and enthalpy at point 4. So it is isenthalpic. So 3 and 4 enthalpies are same. Is it clear, my dear students? If this is clear, I'll proceed with your permission. चलो कोई बात नहीं. Let us start with a simple example. चलो before that कुछ theory दे दूंगा सर. मेरे प्यारे दोस्तों, लेट मी गो फॉर वॉल्यूम. सर यहां से क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन मे बी ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सर इस बार का क्वेश्चन मे बी ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. लेट अस सी व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. ठीक है, व्हाट डज इट मीन सर? मेरे पास एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है सर. This is the outer dead center and this is the inner dead center. This is IDC and it is ODC. Very good. मतलब इसको बोलते हैं stroke length. This we call it as stroke length. Excellent, sir. This is the stroke length. Okay, no problem at all. This is the stroke length. Let the inner diameter of the cylinder be D. मेरे प्यारे दोस्तों, the piston is, देखो एक बार देखो, the piston is sweeping between these ऐसा, the piston is sweeping like this. So therefore this volume, ये पूरे वॉल्यूम को बोलते हैं swept volume and that is given as pi by 4 d square L. This is the swept volume of a single cylinder. In a vapor compression system, if the plant is very big, अगर plant बहुत ही बड़ा रहता है, तो you can go for more than one compressor also. But this is the swept volume of a single cylinder. If you have k number of cylinders, I'll be multiplying with k. यहाँ तक समझ में आया? Very good. देखो एक बार. The piston is moving from this end to this end. So this is the swept volume. And please note down that piston is coming and touching here and going out. Again coming. So this volume is known as clearance volume. This is clearance volume, sir. Very good. There is one term known as clearance factor. Mitro, there is one term known as clearance factor. So let me write very clearly. Clearance factor, and that I designate with C. The clearance factor is defined as the ratio of clearance volume to the swept volume. Vc by Vs. Is it clear, my dear students? देखो, clearance volume to the swept volume इसको बोलते हैं clearance factor. मेरे प्यारे दोस्तों, अब आराम से देख लेना सर. मुझे बताओ, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का डेफिनेशन मैं बताता हूं सर. एक्चुअल वॉल्यूम entering the compressor to the swept volume. ठीक है सर. यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे सर. मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो. If you see that, देखो, if someone asks in interview, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछते हैं तो लाइक फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फिजिकल मीनिंग क्या है, you should give the answer as it is the breathing capacity of a compressor. What do you mean by breathing capacity? मैं बताता हूं सर. We do have lungs है, तो maximum air lungs can store, which we call it as tidal air. कुछ वैल्यू है सर, so many meter cube, so many centimeter cube, जो भी है, cubic volume, cubic units में, the volume that it can hold. But are you breathing to the maximum? देखो एक बार, देखो हम क्या कर रहे हैं सर, इधर देखो. But lungs, maximum you can take.
मैक्सिमम कहां तक लोगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, लेकिन इट इज नॉट टेकिंग, तो एक्चुअल वॉल्यूम इज लेस देन स्वेप्ट वॉल्यूम. तो इवन दो आई कैन होल्ड मैक्सिमम वॉल्यूम बट आई एम नॉट होल्डिंग माई लंग्स. देखो अगर आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो यू विल बी इंप्रूविंग योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सेम गोस विद कंप्रेसर. इज इट क्लियर सर? Is it clear, sir? Yes. So therefore, it is the actual volume by swept volume. इधर देखो sir. At what point actual volume entering the compressor? At what point the refrigerant is entering the compressor? One. Let V1 be the specific volume of the refrigerant entering the compressor. क्या मतलब है सर? क्या मतलब है सर? Let the specific volume of the refrigerant. Do you know the meaning of specific volume, sir? मैं बताता हूं. Specific volume का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी. इसका मतलब है at what point it is entering, sir? It is entering at point 1. It is entering at point 1. It is entering at point 1. Let V1 be the specific volume at the entry point to the compressor. ठीक है. लेकिन actual volume entering it for 1 kg these many meter cube are entering. अगर refrigerant mass flow rate है m dot, what is the meaning of m dot? So many kg per second. मेरे प्यारे दोस्तों 1 kg has a volume of these many meter cube and m kg enter है तो total volume क्या होगा? So total volume entering, अरे 1 kg के लिए इतना है, सो m kg के लिए कितना होगा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम एंटरिंग is equal to m dot v1. Let's see the unit of this. M dot is in kg per second and specific volume is meter cube per kg. तो kg is gone, so you will have meter cube per second. मेरे प्यारे दोस्तों, if m dot is in kg per second, this will have a unit of meter cube per second. If m dot is in kg per minute, possibility है sir. If m dot is in kg per minute, V1 is meter cube per kg, so this will be meter cube per minute. So depending on the unit, I'll proceed, sir. Is it clear? So the actual volume entering is m dot v1 by swept volume. इधर देखो sir, इधर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, the volumetric efficiency is given by मित्रों, it is the actual volume. What is actual volume, sir? m dot v1. m dot v1 क्या है सर उसका यूनिट? अगर m dot kg per second में होता है, v1 is already meter cube per kg, और if m dot is in kg per minute, अगर m dot kg per minute है and v1 meter cube per kg, so this can be meter cube per minute if this is kg per minute, और दिस कैन बी मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड भी हो सकता है, इट कैन बी मीटर क्यूब पर मिनट. वेरी गुड सर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी हैज नो यूनिट. सो इफ दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, this should also meter cube per second. If this is meter cube per minute, this will also meter cube per minute. What is the equation of volumetric efficiency? Actual volume entering, because V1 is showing the actual volume entering. So actual volume entering by swept volume, and the swept volume is, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, the swept volume is pi by 4 d square L. एक बार देखना, L is the stroke length, D is the diameter. pi by 4 का कोई यूनिट नहीं होता है. D square is meter square diameter. L is meter, so this is meter cube. Are the units matching? Nah. That's why we have this N. N is what? जो मोटर का शाफ्ट हम कपल कर रहे कंप्रेसर को, the shaft rotation in RPM. अब देखो, अगर ये मीटर क्यूब पर मिनट में है, अगर ये मीटर क्यूब पर मिनट में है, इफ दिस इज मीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको मिनट में ही रखना. क्यों? क्योंकि पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज मीटर क्यूब. रोटेशन का कोई यूनिट नहीं, रोटेशन पर मिनट. यस, मीटर क्यूब पर मिनट. इफ दिस इज पर सेकंड, आप 60 से डिवाइड करना. अगर ये सेकंड में है तो आरपीएम, रोटेशन पर मिनट मीन 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करना, तो ये भी आरपीएस में हो जाएगा सर. बात समझ में आए? बट दिस इज the mass flow rate of all compressors. सारे compressors से कितना मास आ रहा है, but this is showing the swept volume of single cylinder. अगर आपके पास k number of cylinders है, k is number of cylinders, k is number of cylinders, so this will be my equation. So
Please note down that this is the equation of volumetric efficiency. Hope you understood this equation. क्या ये equation सभी को समझ में आया सर? Let me tell you. M dot is mass flow rate of refrigerant. With what rate the refrigerant is flowing? Small v1 is the specific volume at the inlet to the compressor, and d is the diameter of the cylinder, and L is the stroke length, N is the speed, maybe RPM, maybe RPS. So अगर ये RPM per minute में है तो ये भी पर मिनट में होगा, अगर ये सेकंड में है तो इसको क्या करना है, डिवाइड विद 60, तो ये भी पर सेकंड। के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? सर आप कुछ नहीं बोल रहे सर, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। इज द इक्वेशन क्लियर? सर इफ यू आर नॉट सीरियस हाउ कैन आई प्रोसीड सर, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा सर? एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज पहले क्लास में बहुत लोग आते हैं सर, उसके बाद स्टूडेंट्स ही नहीं आते। दिस इज ऑल डिस्टर्बिंग सर। इज इट ओके? तो शैल आई प्रोसीड? यस। कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे सर। नहीं मैं देखो आराम से। आई विल डू इट सर, आप मत करो सर। आई विल डू इट सर, नो वन शुड डू। आई विल डू इट सर, आई विल डू, नो वन शुड डू till we gain confidence. A household refrigerator operates under steady state condition between evaporator temperature. Can I say evaporator temperature is lower temperature? हाँ जी सर। 263 Kelvin. Excellent sir. And the condenser means higher temperature. The higher temperature is 323 Kelvin. Okay sir. The heat load to the refrigerator is 3 kilowatt. What is this? It is the refrigeration capacity. Matlab, it is absorbing 3 kilojoule per second. Kilojoule per second is kilowatt. So therefore, it is 3 kilowatt. The load on the equipment on the refrigerator is 3 kilowatt. The actual COP is half of the Carnot COP. ध्यान से सुनो. The actual COP is half of the Carnot COP. Can I say Carnot COP is the maximum? Yes, it is reversed refrigeration cycle, reverse Carnot cycle, it is maximum. Okay, between same condenser and temperature means the power required is कुछ मत करना मेरे प्यारे दोस्तों. Let us try to find out the maximum COP, which we also call it as ideal COP. This is also known as ideal COP, or it is the reverse, or sometimes we use the word Carnot COP. When I use COP, it means it is a reverse Carnot cycle only. क्या आपको पता है सर? In the last class I derived, it is the lower temperature by higher minus lower. किसी को याद है सर? This is the lower temperature by higher minus lower. This is the COP of a Carnot refrigerator. Please tell me, is this clear? This equation कभी भी याद रखना, अगर कार्नोट का सीओपी पूछता है तो लोअर टेम्परेचर बाय हायर माइनस लोअर. सो व्हाट इज द लोअर टेम्परेचर? एंड टेम्परेचर शुड बी स्ट्रिक्टली इन केल्विन. लेकिन इसके लिए कोई टेंशन नहीं सर. व्हेनेवर इट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, इट डजंट मैटर वेदर इट इज इन केल्विन और सेंटीग्रेड, बट ये सिंगल टेम्परेचर है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन केल्विन. तो आप वाई टू टेक रिस्क, कीप टेम्परेचर इन केल्विन ओनली. ठीक है सर. अब देखो व्हाट इज द लोअर टेम्परेचर? इट इज 200. कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी. एंड हायर, what is the higher temperature? 323. And what is the lower temperature? 263. Can you give me the value of COP? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो. 263 divided by 323 minus 263. What is the value of COP? I think you are getting the COP as 4 point. सब लोग involve हो जाओ. I request everyone to involve. 4.38 383. So what is the actual COP, sir? Mitro, what is the actual COP? Half of the maximum. The maximum COP is 4.383. इसको आप 2 से डिवाइड करना. So the actual COP is equal to anyone? Mitro, 2.1916. Absolutely fine. Now, what is the asking, my dear students? So you know that कल मैं derive किया था. COP is RC by power input. This can be written as, if it is kilowatt, this should be kilowatt. If this is kilojoule per kg, this should be kilojoule per kg. Already this is given in kilowatt, so this should be in kilowatt. So therefore, what is the actual COP, sir? The actual COP is 2.1916 and RC is 3 kilowatt by power input. So if this is in kilowatt, you will also get in kilowatt divided by, okay, अब ये हो रहा है into कितना आ रहा है सर?
Is it 1 point? What is the answer, sir? The power input is 1.368 kilowatt. क्या ये सही है गलत है सर? 1.368. This is the power input. Clear, sirs? Clear, mitro? If this is clear, I'll proceed, my dear students. Is this clear? So answer आ गया sir first वाले का 1.38 something. बोलो मित्रों, मित्रों, yes. Now let's go to the second. So time waste नहीं करेंगे sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नाउ क्लास के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उनका नंबर लेके मैं उनको नोट्स शेयर करूंगा सर, बिकॉज पर्सनल देखो अभी अभी के अभी मैं क्लास के बाद ही आई विल बी गिविंग नोट्स. स्पेशली जो लोग अटेंड करें उन्हीं को देता हूं, किसी को नहीं देता हूं सर. ओके, देखो हाउ टू गेट पीडीएफ. पीपल डोंट अटेंड, जस्ट दे वांट नोट्स. वेरी सैड सर. चलो रीड द सेकंड क्वेश्चन. प्लीज पढ़ो सेकंड क्वेश्चन. प्लीज रीड द सेकंड क्वेश्चन. Come on, come on. Read the second question. I'll do it, sir. Don't do it. I'll do it. For a refrigeration cycle, the ratio of actual COP to the COP of a reversible refrigerator. What do you mean by reversible refrigerator? It is a Carnot refrigerator, which is nothing but maximum COP. And that is given as 0.8. The temperature, the condenser means higher temperature. What is the higher temperature, sir? 51 add 273, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा सर? Is it 324 Kelvin? Am I right? Yes. And what is the evaporator temperature? -30. So add 273. I think you are getting this as 243. Let us calculate the maximum COP, sir. देखो एक बार maximum COP. What is the maximum COP, sir? T lower, it is 243 by T higher 324 minus T lower 243. Please tell me what is the maximum COP, sir? Anyone in the class? What is the maximum COP? मित्रों 243 minus एक second 2 अरे यार 243 divided by फटाफट minus 243. I think you are getting COP as 3. So what will be the actual COP, sir? The actual COP will be equal to 0.8 times. The actual COP is 0.8 times maximum. Maximum is 3. So ye aa raha hai 2.4. Excellent, sir. So therefore, COP is equal to 2.4. पूछा क्या है, sir? Then the power input to the refrigerator is कुछ दिया sir और कुछ दिया? Something is given. The cooling capacity of the plant is 2.4. So means the refrigeration capacity is 2.4 kilowatt. So COP is equal to RC by power input. RC is 2.4 and power input. So therefore, you will get a power input of 1 kilowatt. Absolutely fine. So the answer 1 is correct. Is it okay, मेरे प्यारे दोस्तों? Yes, absolutely fine. Next. ये करो. I'll do it, sir. आराम से टेंशन नहीं लेने का सर, मैं करेगा. टेंशन नहीं लेने का, आई विल डू इट. द फ्लो रेट ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज, देखो देखो यहीं पे करेंगे सर. द मास फ्लो रेट ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज 0.03 kilogram per second. Correct. Then the refrigerant enters the compressor as a saturated vapor at this pressure. After adiabatic compression, it enters the condenser as superheated. Okay. And leaves the condenser as saturated liquid at the same pressure. Use the following data. Okay. And answer the questions. Use the following data and answer the questions. एक बार क्वेश्चन को समझो सर. So I will try to plot it on TS diagram. मेरे प्यारे बच्चों, I'll try to plot it on TS diagram. देखो एक बार क्लास के बाद कुछ डिस्कस करेंगे सर. मेरा एक ही मकसद है, ड्यूरिंग द क्लास टाइम आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम सर. क्लास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे सर हम. ओके, 1 2
3, 4 क्या बोला है सर? The mass fluid is given. The refrigerant enters the compressor as saturated vapor. Which point is entry to the compressor? 1. It is on saturated vapor. Correct. Okay. At 150 point. तो ये pressure दे रखा है सर. It is 150.9. The evaporator pressure is given as 150.9 kilopascal. After adiabatic compression, it enters the condenser as superheated. Yes, it's all superheated region at 500 kilopascal. This is the constant pressure line and this pressure is 500 kilopascal. ये वाला दिया है 500 and it is entering the condenser. यहाँ का temperature is also given, sir. What is the entry to the condenser? It is entering the condenser at 100 degrees centigrade. It is entering the condenser at 500 kilopascal. That is also given and leaves the condenser as saturated liquid. देखो, this is entry to the condenser, leaving यहाँ पे it is leaving the condenser at the same pressure as saturated liquid same pressure पे. Then use the following data. Okay, okay. क्या दिया है सर? अब देखो what is asked. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सवाल देखो सर, पूछा क्या है सर? सवाल है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा है और पावर इनपुट पूछा है. He is asking. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है बच्चों को. प्लीज, there may be a small doubt. The small doubt is, sir, here you said refrigeration effect is generally in kilojoule per kg, but यहाँ पे kilowatt है सर. These two words, refrigeration effect and refrigeration capacity, generally they are used synonymously. So even though he says refrigeration effect, उसका real meaning है refrigeration capacity है सर. Even though it is refrigeration effect, उसका real meaning है refrigeration capacity only, because he asked in kilowatt. Okay sir, अब हम सवाल करेंगे. देखो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेबल दिया सर, ध्यान से सुनो. All these are at one. देखो ये कौन सा प्रेशर है सर? 150.9. It is evaporator pressure. 500 means it is condenser pressure. ठीक है सर, ध्यान से सुनो. So at the evaporator, what is the temperature sir? -20. तो ये टेम्परेचर आ गया आपका -20. And what is this temperature? Condensing temperature 500. ये 500 नहीं है. सुनो carefully. What is the temperature? 15.6. So please note on that condensing is occurring here. Let us take this as 2 dash. Condensation यहाँ पे नहीं हो रहा है सर. Though it is entering here, पहले वो sensible heat reject कर रहा है. After reaching saturation state, then further it is losing latent heat. तो condensation, जो ये टेम्परेचर दिया है 15.6, इट इज दिस टेम्परेचर, ये सैचुरेशन है. देखो ये वाला है. ठीक है सर. अभी क्या दिया है? HF. मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए, लेट दिस पॉइंट बी ओके. नाउ ही इज आस्किंग रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. कैन यू टेल मी व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? You know refrigeration effect is H1 minus, देखो H1 minus H4, but already you know H4 and H3 are same. As they are same, can I write H4 as, मेरे प्यारे दोस्तों, can I write, देखो दोबारा बता रहा हूं सर, refrigeration effect is H1 minus H4, but H4 H3 are same, so therefore this can also be written as H3. Very good. इस डायग्राम, इस टेबल से मेरे प्यारे दोस्तों, from this table tell me what is H1. H1 का मीनिंग बताओ. It is at the lower temperature, मतलब lower temperature. H1, क्या हम H1 को ऐसा लिख सकते सर? H1 is equal to, it is on the saturated vapor curve, it is Hg at 150.9 kilopascal. Yes sir. तो अब बताओ सर, H1 is Hg at lower pressure. ये lower pressure है सर. Hg. देखो can I write, देखो एक बार, this is the lower pressure and this is Hg. So H1 is equal to 178.74, of course, kilojoule per kg. Now ये बताओ what is H3? Can anyone tell the meaning of H3? मैं बताता हूं सर. H3 is equal to, मेरे प्यारे दोस्तों, H3 is equal to, it is on the saturated liquid curve. ये saturated liquid curve पे है सर, liquid curve. तो H1 is HF at, anyone, is this 0.3 at higher pressure or lower pressure? देखो, this is on saturated liquid curve. H3 is HF at 500. HF at 500 kilopascal. So therefore H3 is equal to 500. देखो ये 500 HF. This column is HF. ये HF है, Hg है. So therefore it is 50.64. Wonderful sir.
क्या समझ में आ रहा है सर सभी को? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? चलो अब देखो, नाउ लेट अस फाइंड आउट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 minus H3. What is H1 sir? वहां पे है 178.74 minus H3. What is H3? 50.64. All this is in kilojoule per kg. देखो 178.74 minus 50.64. So this is 128.1. But एक बार यूनिट देख लेना किलोजूल पर केजी. But he is asking in kilowatt, and you know RC is equal to m dot into RE. So therefore, refrigeration capacity, what is m dot? M dot is 0.03 and RE is 128.1. Let us check the unit. M dot is kg per second and this is kilojoule per kg. Kg is gone, kilojoule per second is kilowatt. So therefore into 0.03, I think this is 3.84 kilowatt. एक बार देखो ऑप्शन है, yes, option B is correct. Anyone got this answer, sir? मित्रों, you people are not showing any interest. तो छोड़ो सर, मैं सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहा हूं सर. नाउ व्हाट इज द पावर इनपुट? देखो एक बार पावर इनपुट, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो. ही इज आस्किंग पावर इनपुट. हाउ कैन आई कैलकुलेट पावर इनपुट? सो 1 to 2 is compression. You are giving input from 1 to 2. What is the work input? H2 minus H1. But he is asking power input. Power input will be mass flow rate into H. देखो, the work input is H2 minus H1. So power input will be equal to m dot into work input H2 minus H1. Okay. But H2 is not known. H2 is not known. कैसे करें सर? H2 is not known. What to do? मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट सेंटेंस देखो. For the superheated vapor at 500 kilopascal and 100 degrees, the enthalpy is 252.05. दिख रहा है सर? देखो, this is the superheated vapor at 500 Kelvin and 100 degrees. तो ये 500 kilopascal and 100 degrees. तो इस पॉइंट पे, this is the point where the pressure is 500 kilopascal. This is the point where the temperature is 100. At 100 degrees centigrade and 500 kilopascal means he is referring to this point. At this point, the enthalpy is given as 252.05. So 252.05 kilojoule per kg. Already you know H1. Already you know H1. What is H1, sir? Mitro, what is H1? H1 is 178.74. 178.74. Now, and the mass flow rate is given as 0.03 kilogram per second. Now you tell me what is the power input? The power input is m dot into H2 minus H1. So therefore, the power input is m dot is 0.03 and H2 is 252.05 minus H1 is 178.74. Please calculate. एक बार यूनिट चेक कर लेंगे सर. Let us check the unit. M dot is kg per second. This enthalpies are in kilojoule per kg. So therefore you'll get kilojoule per second means so many kilowatt. What's the answer, sir? एक बार चेक कर लेंगे. 252.05 minus 178.74 into 0.03. ये आ रहा है 2.199 और approximately 2.2 kilowatt is the right answer. Okay sir? बोलो सब लोग एक. Okay sir? Okay sir बोलो. मुश्किल है सर आपको पढ़ाना. वेरी गुड. जगदीश ने एक बहुत अच्छा, थैंक यू जगदीश. जगदीश ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा. सर, in the question, if H2 is not given, what to do? Good question. देखो सर, सपोज, बहुत अच्छा सवाल पूछे सर आप. पूछो सवाल पूछो. विदाउट आस्किंग क्वेश्चन यू कैनॉट लर्न. यस सर. प्लीज नोट डाउन दैट जो हायर टेम्परेचर दिया है आपके क्वेश्चन में
वो ये वाला नहीं है सर। कंडेंस से सैचुरेशन टेम्परेचर आर गिवन, सो फेस चेंज इज कमेंसिंग, कहां पे शुरू हो रहा है? कंडेंसेशन यहां पे, जो आपको 15 डिग्री कुछ दिया सर क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन, वेट इन द क्वेश्चन देखो एक बार कहीं पे दिया 15.06, इट इज दिस। देखो एक बार मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं सर, इसी क्वेश्चन को एक बार देखो। This temperature is given, this is a constant temperature, so now I write, now I'm giving you some additional information. T2 dash is equal to T3 is equal to कितना है सर? 15 point something is given, एक बार देखो 15.6, 15.6, ठीक है सर, ठीक है सर। T2 dash T3, and already you know this temperature is 100 degree centigrade given. So actually physically what is happening, I'll tell you. My refrigerant temperature is 100, so it starts losing heat, it loses. So once it loses heat, from here to here there is a difference of temperature, so it is sensible cooling. तो यहाँ आने के बाद it starts losing latent heat. So phase change is starting here. So whatever in the table it is given, this is the condensing temperature. ठीक है सर, now I'll tell you very clearly. एक बार देखो सर, my dear loving students, when can I treat a gas as an ideal gas? I can treat a gas as an H2 पे कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होता है सर। H2 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होता है सर, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब जब दोनों का मिक्सचर होता है उसमें मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस वेपर, यहां पे तो पूरा कंप्लीटली इट इज वेपर, वेर इज द लिक्विड, कोई फ्रैक्शन है सर? ड्राइनेस फ्रैक्शन हैज नो रेलेवेंस in the superheated region, dryness fraction has no relevance in the subcooled region. ड्राइनेस फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, फ्रैक्शन का मतलब दो या तीन का मिक्सचर, दो कहां पे मिलेंगे आपको? इस वेट रीजन में ही मिलेंगे। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन हैज रेलेवेंस ओनली इन दिस रीजन, इसी रीजन में होता है। तो कभी ये गलतियां मत करना सर, इज इट ओके? किस, अब देखो न, मेरे प्यारे दोस्तों, when can I treat a gas as an ideal gas? I can treat a gas as an ideal gas at low pressures and high temperatures. My dear students, जब आप रैंकिन साइकिल पढ़ेंगे पावर प्लांट, अभी मैं शुरू करूंगा, तो कल का क्लास बहुत, अब कंटिन्यूअसली आई विल टेक क्लासेस सर, अब डेली डेली आई विल नॉट रिमाइंड यू, रेगुलरली आई विल टेक क्लासेस फ्रॉम 10:30। सो अब कल का क्या करेंगे, हम साइक्रोमेट्री स्टार्ट करेंगे, विच इज अ डिस्कनेक्टेड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, साइक्रोमेट्री शुरू कर रहा हूं सर कल। ओके चलो देखो, इन पावर प्लांट, व्हेन यू स्टडी थर्मल पावर प्लांट रैंकिन साइकिल, वहां पे बॉयलर के प्रेशर्स बहुत हाई होते हैं सर। You know, we pump it to very very high pressures, sometimes 180 bar, sometimes 200 bar, sometimes 220 bar. So at high pressures, even though the fluid is in superheated state, gaseous state, superheated state का मतलब gaseous state में होता है vapor, but I cannot use that vapor as ideal gas because the pressure is so high. लेकिन RAC में, in vapor compression refrigeration cycle, the pressures are not that high, therefore you can use ideal gas equation because समझ में आ रहा है सर सभी को? So no problem at all, क्योंकि temperature is high, pressures are low, pressures are low, समझ में आ रहा है सर? That's why I can use ideal gas equation in VC cycle, but Rankine cycle में ये गलतियां मत करना सर। तो अब बताओ सर, हम पढ़े थे, देखो H2 can be written as, अगर आपको, what is H2? It is a superheated enthalpy, enthalpy of superheated vapor, this is in the superheated region. H2 is equal to H2 dash plus Cp of vapor, इस वेपर का स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T2 minus T2 dash. You can use this equation for calculating the, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर देखो H2 is H2 dash plus Cp of vapor T2 minus T2 dash, देखो यहां पे और एक बात बताता हूं, क्या H2 dash पता है सर? बिल्कुल पता है सर। What is the meaning of H2 dash, anyone? It is Hg at condenser pressure और condenser temperature. Is it correct sir? What is the meaning of H2 dash? एक बार देखना, H2 dash का मतलब क्या है सर? H2 dash
इट इज ऑन जी कर्व एच जी एट कंडेंसर टेम्परेचर। ठीक है सर, ये तो टेबल से आराम से मिल जाएगा, इसका कोई नहीं। स्पेसिफिक हीट हाई टेम्परेचर पे, ये भी दिया जाएगा सर, ये भी दिया जाएगा। द ऑलरेडी T2 डैश इज नोन, ऑलरेडी T2 डैश इज नोन, ये भी दिया जाएगा, बट ये नहीं दिया जाएगा सर। विदाउट नोइंग T2, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ T2 सर? एनीवन, व्हाट इज T2? बता सकते हैं सर T2 का मीनिंग? इट इज द compressor exit temperature or temperature at the inlet to the condenser। क्या आप क्लास में कोई बता सकते हाउ टू कैलकुलेट T2? एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर्स को केल्विन में रखना पसंद करो, हियर इट इज द डिफरेंस, तो फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर डिफरेंस है तो इफ दिस इज इन सेंटीग्रेड दिस विल बी इन सेंटीग्रेड, इफ दिस इज इन केल्विन दिस विल बी इन केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आप बताओ सर। हाँ, देखो मैं बताता हूं। आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ T2, विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ T2 यू कैन नॉट सॉल्व। मैं बताता हूं सर क्या करना है। व्हाट इज 1 to 2 प्रोसेस सर? ये भी सवाल आ सकता है सर, कंप्रेसर डिस्चार्ज का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। एंड प्लीज नोट डाउन दैट what is entropy at 1 and 2? 1 to 2 is isentropic, so S1 will be equal to S2. So you tell me what is S1? It is Sg. 1 to 2 is isentropic, 1 और 2 का एंट्रोपी सेम है, तो S1 is Sg, S1 is Sg at और इवेपोरेटर प्रेशर। तो S1 is Sg at evaporator temperature pressure। बिल्कुल सही है सर, S1 is Sg, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। S1 is Sg, वेरी गुड सर। तो ये मिल जाएगा सर S1। तो इफ S1 इज नोन S2 विल बी सेम। बट मेरे प्यारे दोस्तों, S2 इज इक्वल टू, ये सुपरहीटर में इज S2 डैश प्लस Cp ऑफ वेपर ln T2 बाई T2 डैश। सर ये कहां से आया है सर? ये थर्मोडायनेमिक्स से आता है सर। इज इट ओके? दिस यू कैन, इज इट ओके सर? This we can study from thermodynamics। S2 is equal to S2 dash plus Cp of vapor ln T2 by T2 dash। अब देखो, this is not difference in temperatures and these temperatures should be strictly in Kelvin। तो मैं दोबारा बता रहा हूं सर, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या S1 आपको मिला? टेबल में से मिला सर। S1 इज Sg, S1 इज Sg। तो S1 अगर Sg है तो S2 S1 तो बराबर है, ये तो टेबल से मिलेगा। दिस यू कैन गेट फ्रॉम टेबल, तो S1 S2 टेबल से मिल जाएगा। बट S2 इज S2 डैश प्लस Cp ऑफ वेपर। ध्यान से सुनो, ये दिया जाएगा सर। यस सर, ऑलरेडी S2 S1 तो सेम है, ऑलरेडी S1 S2 तो सेम है, तो ये भी पता है सर। S2 डैश, व्हाट इज S2 डैश सर? इट इज Sg। S2 dash is Sg at condenser pressure। तो this is Sg at condenser pressure। तो ये भी मिल जाएगा सर आपको, ये भी मिल जाएगा। सो T2 dash is already known, T2 dash is already known, ये भी पता है सर, बट केल्विन में रखो। एंड एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट T2। इस इक्वेशन से यू फाइंड T2 और T2 यहां पुट करना तो आपको एंथैल्पी H2 आ जाएगा सर। इज द प्रोसीजर क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Is the procedure clear, sir? If this is clear, I'll proceed, sir. अरे यार, अब समझ में आया सर हाउ टू डू? समझ में आया सर हाउ टू डू? यस यस, वेरी गुड। नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ना। ये करो, ये पढ़ो सर से एक बार, आई डू इट आराम से। इट्स अ गुड क्वेश्चन सर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। A domestic refrigerator set at 2 degree centigrade. What is this 2 degree centigrade? It is the lower temperature। तो केल्विन में कन्वर्ट करना सर, 275 केल्विन, विच इज नथिंग बट, ठीक है सर,
हैंडल्स एवरेज थर्मल लोड ऑफ 8000 किलोजूल पर केजी। सर समझ में नहीं आया, एक बार देखना। दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, so it is handling a load of 8000 kilojoule per day. क्या मतलब है सर? In one day from the storage it is absorbing 8000 kilojoule of heat. Let me repeat, sir. Let me repeat, my dear students. Let me repeat. In one day it is absorbing 8000 kilojoule of heat per day. So therefore the refrigeration load or the refrigeration capacity is 8000, that is the thermal load, kilojoule per day. ठीक है सर? And ambient temperature, the higher temperature or the surrounding temperature is, convert in Kelvin, 273 plus 30 is 303 Kelvin. Okay, the COP of the refrigerator is, the actual COP is 0.15 times the Carnot COP. Can I write the Carnot COP as maximum COP? Yes. Find the daily electricity consumption in kilowatt hour. Must question hai sir. Find the daily electricity consumption in kilowatt hour. It's a good question. Just listen to me. ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंज्यूम हो रहा है सर? बिकॉज मोटर इज रनिंग, वी आर सप्लाइंग पावर टू द मोटर। ये मोटर किसके लिए रन हो रहा है? कंप्रेसर को रन करने के लिए। मींस ही इज आस्किंग जो कंप्रेसर पावर इनपुट इज नथिंग बट योर डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। द पावर इनपुट इज नथिंग बट डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। एक बार देखो सर, लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम सीओपी। माय डियर स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम सीओपी इज नथिंग बट टी लो। सब लोग रेडी रखना कैलकुलेटर्स। T lower by T higher minus T lower. So let us calculate the maximum COP. What is the lower temperature, sir? The lower temperature is 275 and the higher temperature is 303. And please tell me what is the value of this maximum COP. फटाफट calculate करो sir. 275 divided by 303 minus 275 and ये आ रहा है 9.82. This is the maximum COP. Whenever you are calculating Carnot COP, that will be maximum. So what is the actual COP, sir? The actual COP is, in the question it is given, the actual COP is 0.15 times, the maximum is 9.821. Just multiply this with 0.15. So the actual COP is equal to 1.4732. COP का कोई यूनिट नहीं होता है सर। वेट। Now everyone knows COP is equal to RC by power input. ठीक है सर। What is the actual COP? It is 1.4732 is equal to, what is RC, sir? RC is, units are very important, 8000 kilojoule per day. So if this is इसका कोई यूनिट नहीं है, if this is 8000 kilojoule per day, it will also be in kilojoule per day. What is this? Power input. So let us calculate the power input. तो कितना आ रहा है सर? So it will be, you take this to left side and you take this to right side, it will be 8000 divided by, so I'm getting this power input as 5430 kilojoule per day. यहां तक सबको समझ में आया सर? Up to this, is it clear, sir? Hope this is clear. Absolutely fine. So therefore 5430. So the power input is 5430 kilojoule per day. Excellent, sir. But the answer is not this. He is asking the daily electricity consumption in kilowatt hour. Is it a daily consumption? Yes, sir. Power input is daily. So daily consumption is, the daily consumption is 5430 kilojoule, but he is asking the daily consumption, ये तो per day है, means daily, in kilowatt hour. How to do it, sir? How to do it, sir? Manipulate करो sir. कैसा manipulate करेंगे? I'll write. So the
daily consumption is equal to 5430 kilojoule. Same. I want in kilowatt. How can I get kilowatt? So you divide with second, multiply with second, and you tell me what is this kilojoule per second. And you know this kilojoule per second is kilowatt. So therefore, now I write the daily consumption is equal to 5430. What is kilojoule per second? Kilowatt. But there is second also. But he is asking not in second, he is asking per hour. कैसे करेंगे sir? 1 hour is equal to 3600 second, or 1 second is how much of an hour? So 1 second is equal to 1 by 3600 of an hour. So therefore, this second can be written as, मित्रों ये second को हम लिख सकते, this second को हम लिख सकते, what is second? 1 by 3600 of an hour. So therefore, so daily consumption is equal to, what is the value of this sir? 5430 by 3600 divided by 3600, 1.508, 1.508 kilowatt hour. So this is the daily consumption in kilowatt hour. The answer is 1.508. अच्छा question था sir. Was it a good question? Sir, I am trying my level best. मतलब without wasting time, NEET देने की कोशिश कर रहा हूँ sir. Clear? क्या हुआ? मस्त question था sir ये. This was a good question. चलो. हाँ चाहिए. अच्छा, ये भी करना है क्या? चलो. Shall we proceed with your permission? मित्रों, how to get PDF of this class? Don't attend, you'll get PDF. After the class, I'll tell you something. After the class, I'll tell you something. क्योंकि क्लास के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ ओपन करूंगा, तभी मैं I'll entertain. Okay? ठीक है. Is this okay, sir? चलो. This question is over. Next. ये करो. A refrigerator is used to maintain certain space at 10 degrees centigrade. Means the lower temperature is, यहाँ लिखेंगे सर, 10 degrees centigrade. So I can write it as, add 273. It will be 283 Kelvin or 10 degrees centigrade. It pumps these many joule of heat per hour of heat from the space. What is the meaning of removing that much heat from the space? Refrigeration effect or refrigeration capacity. So what is the refrigeration capacity, sir? How much heat is removed? 18,000. क्लास के बाद कुछ लिंक दूंगा आपको नोट्स के लिए. आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू. ओके, सो देखो एक बार. अच्छा, यू ट्राई टू सॉल्व सर. अच्छा, व्हाट डज किलोवाट आवर मीन? इट मींस, यू नो माय डियर, एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन रेट को हम क्या करते हैं ना, बहुत बढ़िया सवाल पूछे है सर. देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आता है ना, actually he'll say this month the number of units are 620, but that is kilowatt hour, because per second if I show it will be a big number. तो actually एक convenient unit को convert करने के लिए you have converted in hour, because second में बहुत ज्यादा होता है sir. If I express, so monthly अगर आप लेते हैं तो it will be in lakhs. that reading अच्छा नहीं रहता. So therefore उसको एक quantifiable neatly आने के लिए actually है तो वो देखो, please observe here. एक सेकंड. किलोजूल पर सेकंड. So what is kilojoule per second? देखो, can I write this as kilojoule? Yes. So kilojoule is equal to
किलोवाट सेकंड, किलोवाट सेकंड, बट आई राइट दिस एज बाई 3600 आवर। है तो एनर्जी कंजम्पशन ही, बट वी शो इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो यू डू दिस। अरे यार, देर आर टू थिंग्स, directly you express in terms of energy or you express in terms of rate. So this is the other way of expressing. Okay, right. चलो अब ये सवाल करेंगे सर। So let's do this question. ठीक है। Daily I am taking class from 10:30 to, अब देखते हो सर अब कहां तक, अब देखो, गॉट इट ना, देखो ये क्वेश्चन करेंगे सर, क्योंकि अगर मैं क्लास के टाइमिंग बताता हूं करेक्ट एंड में आके नोट्स लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा सर। आई डोंट नो व्हेन आई एंड। देखो, हाँ, the lower temperature is 283 and it pumps refrigeration दिया है, and the higher temperature is 30 degree centigrade, 273 plus 30 is 303 Kelvin। ठीक है सर। okay, the power input is 2 kilowatt, the ratio of COP of this refrigerator to the Carnot COP, it means maximum। कैसे करेंगे सर? आराम से the actual COP calculate करेंगे सर। the actual COP is RC by power input। what is RC given? And you should be very careful, this power input is given in kilowatt but this is per hour। can I write this as, मेरे प्यारे दोस्तों, hour को let me convert, so hour per hour, hour means 3600 second। very good sir, hour is 3600। तो how much is RC sir? anyone, what is RC? ये zeros गया, कितना आ रहा है सर ये? इज इट 5? आई थिंक यू आर गेटिंग 5 किलोवाट ना? इज इट किलोजूल पर सेकंड? यस। तो आप यू कैलकुलेट द एक्चुअल सीओपी सर। द एक्चुअल सीओपी इज आरसी, आरसी इज 5 by power input। what is the power input sir? 2। I think the actual COP is, आपको आ रहा है, both are in kilowatt, is 2.5। then he is asking the ratio of actual COP to the maximum COP. How to calculate the maximum COP, sir? What is the maximum COP? It is the lower temperature by higher minus lower. The lower temperature is 283 by the higher temperature is 303 and the lower is 283. How much is this? 283 divided by 303 minus 283. So I think you are getting this maximum COP as, therefore, he is asking the ratio. So the actual COP to the maximum COP is equal to, actual is 2.5 and the maximum is 14.15. तो कितना आ रहा है सर ये? 0.1766। Anyone? What is the answer, sir? Excellent, sir. ठीक है? Right. We'll go to the next question. अब देखो, आराम से देखो सर, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं बताता हूं व्हाट इज दिस क्वेश्चन। सबकूलिंग, बिफोर दैट यहां पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा सर। ये देखो, ऑलरेडी वी हैव रिप्रेजेंटेड वीसी साइकिल समथिंग लाइक दिस, ऑलरेडी अभी दिया मैं। दिस इज गिवन टू अस। ठीक है सर। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सर? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? H1 minus H4। व्हाट इज कंप्रेशन वर्क? H2 minus H1। ठीक है, अब देखो, there is one term known as subcooling। you are, देखो, सुपरहीटिंग मींस गोइंग टू द राइट साइड, सब कूलिंग मींस गोइंग टू द लेफ्ट साइड। मित्रों, सब कूलिंग इज नथिंग बट, मेरे प्यारे दोस्तों, you are not allowing the refrigerant to leave as a saturated liquid। तो और कूल करेंगे, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कूल करेंगे। यस, सो दिस कूलिंग इन कंडेंसर, दिस वी कॉल इट एज सब कूलिंग, सब कूलिंग। तो
Without subcooling, it is the exit is 3. With subcooling, the exit is 3 dash. अब यहां से देखो सर, यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, this is your throttling and then 4 dash. देखो एक सेकंड देखो, the old cycle is without subcooling, without subcooling, without subcooling. What is the cycle, sir? The cycle is 1 2 3 4. With subcooling, what is the cycle, sir? With subcooling, 1 2 3 dash 4 dash. Have you understood? देखो, subcooling is nothing but it is not leaving the condenser as saturated liquid, but it is leaving और cool करेंगे, ये subcool होके liquid में आ जाएगा. So therefore अब यहां से throttle करके हम ये cycle करवा रहे हैं. So is the cycle clear, sir? Is the cycle subcooling cycle clear, sir? Now you tell me what are the effects of subcooling? You tell me, sir. देखते हैं सर क्या क्या हो रहा है. What is the original refrigeration effect? The original refrigeration effect, original cycle without subcooling, original is 4 to 1. 4 to 1 means H1 minus H4. What is the new cycle? अब सबकूल होने के बाद यहां से यहां ले रहा है सर, यहां से यहां ले रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां ले रहा है सर. ठीक है सर. तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है सर? फर्स्ट, what is happening to the refrigeration effect? Originally only this was the refrigeration effect. Now instead of H1 minus H4, subcooling के बाद this from here to here it is absorbing, so refrigeration effect is increasing. Correct or not, sir? Correct or not, sir? Got it, sirs. Got it. There is an increase of refrigeration effect. Absolutely fine. तो पहले यहां पे रोक रहे थे, अब यहां इंक्रीज हुआ. Anyone, what is happening to the work input? Anyone in the class, what is happening to the work input? देखो, work input is 1 to 2. Subcooling affect the work input. Now देखो, original cycle 1 without subcooling 1 2 3 4. So compressor work is 2 minus 1. With subcooling 1 2 3 dash 4 dash. So whether it is with subcooling or without subcooling, this is not at all disturbed. The work input is constant. So I will write this as constant, remains unchanged. Absolutely fine. Now you tell me what is its effect on COP? COP is RE by work input. मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्क इनपुट इज कांस्टेंट, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है सर. दिस इज इंक्रीजिंग and this is constant. So what will happen to COP? COP will increase. These are the effects of subcooling. Clear? Clarity आ गया सर सबको? Clarity आ गया? Yes. इस सवाल को आंसर दीजिए. Please answer to this question. दिख रहा है सर? Can you see the question? Sir, subcooling of a refrigerant liquid increases the COP. Is that statement correct or wrong, sir? Is the first statement correct or wrong? Subcooling of a refrigerant increases COP. Absolutely correct. Subcooling reduces work input. Nah, subcooling has no effect on. So assertion is true, reasoning is false. So the option C is the correct option. Is it okay? Correct, sir. Very good. ये लीजिए.
वाह, अच्छा क्वेश्चन है सर. Read the question. Read the question. Come on, come on. Come on, come on. Read the question and stop. पढ़ के रुक जाइए. I request everyone to read and stop. कहाँ है आपका? नहीं दिख रहा है सर. Come on, read and stop. ठीक है? Let me read it. अच्छा क्वेश्चन है सर. In a vapor compression system, the refrigerant leaves the evaporator and enters the compressor. मतलब evaporator leaving and entry to the compressor. Which point is he referring, sir? Leaving the evaporator, entering the compressor. Which point is he referring? Evaporator leaving, entry to the compressor. Which point is he referring, sir? Anyone? Excellent, sir. Leaving the evaporator means one, entering the compressor is one. So, देखो, in a vapor compression system, the refrigerant leaves the evaporator, enters the compressor at 0 degrees centigrade. ठीक है. The specific enthalpy of saturated liquid and vapor at 0 degrees centigrade are given. देखो, let me draw, sir. यहाँ यहीं पे शो करेंगे तो दिखेगा आपको. अगर मैं इसको मैं थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करूंगा सर. करेक्ट दिख रहा है? यस. यहाँ पे एंट्रोपी, यहाँ पे टेम्परेचर. देखो, हाँ, द रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवेपोरेटर, एंटर्स द कंप्रेसर. What is the temperature given at 0 degrees centigrade? This temperature is given as 0 degrees centigrade. This is 0 degrees centigrade. ठीक है. The specific enthalpy of the saturated liquid and saturated vapor at 0 degrees. So here the enthalpy is given. Saturated vapor and saturated liquid. देखो एक बार. The specific enthalpies of saturated liquid and vapor at 0 degrees. This is the 0 degrees centigrade. So at 0 degrees centigrade, saturated liquid is 50 and the saturated vapor is 250. Excellent, sir. So the enthalpy of the saturated vapor is given as, this is the enthalpy of saturated vapor, that is given as 250. The refrigerant leaves the compressor with an enthalpy of 300. देखो एक बार. It is leaving the compressor. So 2 is given. What is the enthalpy at 2? It is leaving the compressor at enthalpy of 300. 2 is exit of compressor. It is 300, sir. Excellent students of India. The exit from the condenser is throttled to the evaporator pressure. देखो, this is condensation. And from here, it is throttled. Okay, it is throttled. From the exit, the is throttled to evaporator. And then evaporation. ये मेरा cycle है sir. ठीक है. If the coefficient of performance of the refrigerator is 2.8, if the value of COP is 2.5, what is the dryness fraction entering the evaporator? So means which dryness fraction is asked in the question? कौन सा dryness fraction पूछा है sir? बोलो sir. Excellent, sir. Entering the evaporator means 0.3, sorry, 4. You want the dryness fraction at 0.4. Wait. कैसे करें सर? मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो. If you want the enthalpy at 4, it is in the wet region.
Can I write H4 as HF plus X into Hg minus HF? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते सर? If you want the dryness fraction enthalpy here at 4, H4 is HF plus dryness fraction here into Hg minus HF. एक second. H4 is equal to, what is HF? Already at 0 degrees centigrade, HF is given. How much is that? 50. Hg. At 0 degrees centigrade, Hg is given. It is 250. HF. HF is already known. What is HF, sir? 50. Now you tell me, to calculate the dryness fraction at 4, I need H4. How to calculate H4? How to calculate H4? मेरे प्यारे दोस्तों, H4 is equal to H3. ठीक है सर, लेकिन H3 कहां दिया सर? हाई टेम्परेचर पे नथिंग, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन एट 3. वो छोड़ दो, क्या करे सर? एनीवन? H4, देखो, someone said H4 H3 are same. Agreed sir, H3 H4, but no information at higher temperature is given. क्या करो बताओ सर? I want hint from you. Excellent sir. COP से निकालेंगे. COP is equal to refrigeration effect. 4 say 1 is the refrigeration effect. H1 minus H4 by refrigeration effect by work input. What is work input? H2 minus H1. H2 minus H1. What is COP, sir? Already COP is given as 2.8. H1. Can you tell me what is H1? It is Hg. H1 is Hg at 0 degrees centigrade. Already it is given 250. So it is given as 250. And I don't know H4 by, arey yaar, I don't know H4. And H2. Already H2 is given as 300. It is 300. Minus H1 is already known. देखो, H1 is 250. H1 is 250. So it is 250. Now please provide me, please give me the value of H4. फटाफट बोलो. 2.8 into 50. ये आ रहा है H4. I think I'm getting this as 110. So is this value correct, sir? Yes. So यहाँ put करना sir. So H4 is 110 is equal to 50 plus X4 into, ये कितना आ रहा है sir? 200. So I think we can easily calculate 60 divided by 200. I think I am getting the dryness fraction as 0.3. किसी को आया सर 0.3? Excellent students of India. अच्छा क्वेश्चन था सर. था या नहीं सर? अच्छा क्वेश्चन था या नहीं? ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे. Come on. Come on, come on. The COP of a reverse Carnot cycle is 4. If it works as a heat pump and the work input, ये तो रेफ्रिजरेटर का है सर. रेफ्रिजरेटर का COP 4 है. If it works as a heat pump and consumes a work input of, actually it is a power input क्योंकि it is given in kilowatt. So in fact it is power input only. Even though he uses the word work input, it is power input only. The heating effect will be, सुनो ध्यान से सर, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना. आज मैं थोड़ा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे सर. सुनो, this is the higher temperature and this is the lower temperature and this is my
R, तो देखो RE लिखूंगा, it is Q2 and this is my Q1 and this is the work input. Dear students, what is a refrigerator? Refrigerator is a device which maintains lower temperature compared to surroundings. So in refrigerator, your focus is where? It is the lower temperature. So ये मेरा system बन गया था और ये हमारा surroundings बन गया. ठीक है सर. If it is a heat pump, I'm drawing the same line diagram, sir. मैं तो same line diagram draw कर रहा हूँ सर. Very good. इधर देखो सर. Now, if you see winter, in winters the surrounding temperatures are low. विंटर में जो सराउंडिंग टेम्परेचर होते हैं कम होते हैं. दीज आर सराउंडिंग्स. लेकिन आर यू कंफर्टेबल एट लोअर टेम्परेचर सर? आर यू कंफर्टेबल एट लोअर टेम्परेचर? नो. Therefore, what I do is I'll pump heat. Let us say this is Q1 and this is Q2. I'll pump higher to maintain this high temperature. Continuously heat should be pumped. So therefore, this is my what I say system, because this is now I call it as heat pump. If the line diagram is exactly the same, sir, जो line diagram है exactly same है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, द फोकस इज ऑन लोअर टेम्परेचर सिस्टम, ये होता है. अगर हम हीट पंप की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट हीट पंप, माय फोकस इज हायर टेम्परेचर, सो देयरफॉर फोकस ऑन दिस. ये मेरा सिस्टम होता है. तो हीट पंप मेंटेन्स हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स, रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स. तो यहां का सीओपी क्या होगा सर? अगर हम सीओपी की बात करते हैं तो क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट इज Q2 एंड एनर्जी इनपुट इज ये है. एंड यहां का क्या है सर? अगर हम हीट पंप की बात करते हैं, व्हाट इज योर डिजायर? द डिजायर इज टू मेंटेन हायर टेम्परेचर. तो हाई मेंटेन करने के लिए दिस मच हीट शुड बी सप्लाइड, लो मेंटेन करने के लिए दिस मच हीट शुड बी रिमूव्ड. सो देयरफॉर डिजायर्ड इफेक्ट इज दिस वन एंड एनर्जी इनपुट इज ओके. एंड यू ऑल्सो नो माई डियर स्टूडेंट्स, एक बार इधर देख लेना. सपोज दे आर आइडियली ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स. मान लो आइडियली ऑपरेट कर रहे हैं, तो यू नो ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है. तो वर्क इनपुट प्लस Q2, वर्क इनपुट प्लस Q2 is Q1. So work input will be equal to Q1 minus Q2. So can I write COP? ये तो रेफ्रिजरेटर है सर, as Q2 by work input is Q1 minus Q2. And what is the COP of heat pump, sir? The COP of heat pump is Q1 by work input. ये भी अंदर आ रहा है, ये भी. This plus this is this. So therefore, W input is Q1 minus Q2. फर्क दिखा सर आपको? Yes. So if it is a heat pump, it is higher by work input or Q1 minus Q2. If it is a refrigerator, it is lower by this. आ गया sir. So therefore, now COP of heat pump is equal to Q1 by Q1 minus Q2, and COP of a refrigerator is Q2 by Q1 minus Q2. If they operate ideally between same temperature limits, can I write this as COP of heat pump minus COP of refrigerator? क्या होगा sir? Heat pump is Q1 by Q1 minus Q2 and refrigerator is Q2 by Q1 minus Q2. So therefore, COP of heat pump minus COP of refrigerator is equal to Q1 minus Q2 by Q1 minus Q2. ये 1 हो जाएगा. So COP of heat pump is equal to 1 plus COP of refrigerator. ये याद रख लेना सर. तो यहां से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ सकता है सर. कैन हीट पंप हैज अ COP लेस देन 1? क्या हीट पंप का COP 1 से कम हो सकता है सर? हीट पंप इज 1 plus something. When it is 1 plus something, it will always be greater than heat pump का COP. I am not asking about refrigerator sir. कल हम देखे थे रेफ्रिजरेटर का COP, it may be 1, it may be less than 1, it may be greater than 1, but the COP of heat pump can never be less than 1. ये याद रख लेना सर. ये तो डिराइव किया. अब हम सवाल पाएंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे सर. On this many questions can come, but the condition is ideally they are operating between same temperature limits. So 1 plus COP of refrigerator. ठीक है सर. अब आंसर दीजिए. देखो, if the COP of refrigerator is 4, what will be the COP of heat pump? Anyone? Heat pump का COP क्या होगा? 1 plus COP of refrigerator.
So COP of heat pump will be equal to 5. Now he is asking COP of heat pump is desired effect by work input. And already you know the COP of heat pump kitna hai sir? COP of heat pump it is 5. एंड डिजायर्ड इफेक्ट यही तो पूछा है सर, हीटिंग इफेक्ट और डिजायर्ड इफेक्ट, लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या पूछेगा? कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पूछा है। वर्क इनपुट, व्हाट इज द पावर इनपुट सर? वर्क इनपुट इज 1 किलोवाट। तो व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट? डिजायर्ड इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट इज 5 into 1, दैट इज 5 किलोवाट। इज इट क्लियर सर? क्या है क्वेश्चन समझ में आया सर? से समथिंग डियर। अभी मैं नोट शेयर करूंगा सर, लेकिन ओनली फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ऑल। हाँ जी सर, ये करो, ये करो, come on, do it. I'm waiting for your answer. Come on, do it. I'm waiting for your answers. सर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे सर। कल का क्लास अगेन आई विल बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज साइक्रोमेट्री। यू पीपल आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, मजा नहीं आ रहा सर। सी आर यू फॉलोइंग, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग साइक्रोमेट्री, सेम टाइम 10:30। सर आज का क्लास कुछ समझ में आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड टुडेस क्लास? मतलब अभी तक जो हुआ, वॉट एवर हैव कवर्ड, हैव यू फॉलोड? पक्का? यस, ये क्वेश्चन करेंगे सर। The following data is for actual vapor compression cycle. The enthalpy at the compressor inlet. Can you tell the meaning of this? Enthalpy at the compressor inlet. Compressor inlet is 246. The enthalpy at the compressor exit is 286. The heat load on the evaporator. नहीं समझ में आया सर, इधर देखो, मस्त क्वेश्चन है सर ये। गुड क्वेश्चन। What is the load on the evaporator sir? अच्छा क्वेश्चन है सर। What is the load on the evaporator? Whatever the heat it is taking from this point to this point, that is the load. The load, heat load on the evaporator is refrigeration effect. So whatever it is absorbing from the storage, ये हमारा इवेपोरेटर है सर। स्टोरेज से जो भी ले रहा है दैट इज द लोड। तो H1 minus H4, H1 minus H4, that is the load on the evaporator, and that is given to us as 158. Am I right sir? The heat load on the evaporator is 158. What is the enthalpy at the exit of condenser? कौन सा पूछा है सर? I think he is asking H3 or H4, because 3 to 4 enthalpy will be same because it is throttling. 3 to 4 enthalpy will is asked. Okay, no problem sir. अब देखो कैसे करेंगे सर? हाउ डू वी डू दिस सर? कैसे करेंगे रे? क्या है सर इसमें? H1, H4. H1 is already given as 246. H1 is already given as 246. Minus H4 is equal to 158. He is asking the enthalpy at the exit of condenser. Exit of condenser means H4. So what is H4, sir? 246 minus 158. How much is this, sir? Sad you people are not in a position to calculate also. Very sad, sir. Very sad. You people are not in a position to
कैलकुलेट ऑल्सो बहुत सैड है सर, मुश्किल लग रहा है सर। वेरी सैड। समझ में आया सर आपको? 88। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, he has given everything. So if you have not understood, I'll explain again. Is the question clear? So if this is clear, we'll move to the next question without wasting time. ये करो, अच्छा क्वेश्चन है सर। अब ये करेंगे, दिख रहा है सर? कैन यू सी द क्वेश्चन? क्लियर, वेरी गुड केतन। केतन और कौन है? प्रॉबर्ली डरला, दरला, प्रॉबर्ली, अजय कुमार, एलेक्स, यश चोपड़ा। ओके, ठीक है। हेलो, यस, बोलो। नहीं, नहीं, चलिए, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, कैन यू सी सर? गेम ओवर, कौन है रे गेम ओवर? दिख रहा है ना? ओके, आई विल डू दिस सर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा यू नीड माय इनपुट्स, यू कैन सी ना? ऑल गुड, एक्सलेंट। अब देखो, in a simple vapor compression cycle, following properties of refrigerant are obtained: compressor inlet 1, compressor discharge 2, condenser exit 3, means our points only. Please note on that these are small v1, small v2, small v3, meter cube per kg. All these are specific volumes. ठीक है? The piston displacement volume is 1.5 liter per stroke. What do you mean by piston displacement? Swept volume. What do you mean by piston displacement? Piston जब swept volume. How much is piston displacement, sir? देखो एक बार. The swept volume is, यहाँ पे लिखेंगे sir, and we'll use this space judiciously. The piston displacement, देखो, एक second, I'll show you very clearly. The piston displacement volume for the compressor is 1.5 liters. What is piston displacement? Swept volume. You know very well, what does 1.5 liter mean, sir? 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. So therefore 1.5 liter is 1.5 liter का मतलब 10 power minus 3 meter cube. ठीक है sir. Okay. And the volumetric efficiency is 80%. Okay. The speed of the compressor is 1600 rpm. What is the power rating of the compressor and refrigeration effect? Both are in kilowatt. इसका मतलब refrigeration effect का मतलब refrigeration capacity है. अब देखो, and some data is given. देखो एक बार, I converted liter to meter cube. ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर मेरे प्यारे दोस्तों? इधर देखो, the power input to the compressor is mass flow rate into work input. So if you want the power input, it will be mass flow rate. What is the work input, sir? Compressor work is H2 minus H1. Wait, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है H2 H1 का? ध्यान से सुनो, H2 is already given, sir, in the question. H2 is 222.6 kilojoule per kg, and H1 is 183.2 kilojoule per kg. ठीक है, तो H2 H1 are known. Unfortunately, to calculate the power I need mass flow rate. How to calculate mass flow rate, sir? सब लोग बताओ how to calculate mass flow rate. इधर देखो, the volumetric efficiency is given by m dot v1 by pi by 4 d square ln k. यहाँ पे
Did he talk anything about number of cylinders, sir? Did he talk about the number of cylinders? बोलिए सर. बोलो सर. I am waiting for your answers. No. Whenever the number of cylinders are not given, you should take it as one. One only. तो therefore यहाँ पे मैं k को one ले रहा हूं सर. बहुत बढ़िया. आप बताइए सर, what is pi 4 d square L? मित्रों, what is pi by 4 d square L? Pi by 4 d square L is nothing but it is the swept volume. So already swept volume is given. मित्रों, can I write this as, my dear loving students, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर? m dot v1 by pi by 4 d square L as the swept volume. Yes, vs into n. Excellent, sir. And one more thing, मेरे प्यारे दोस्तों, if I keep in rotation per minute, if I keep rotation per minute, m dot will be kg per minute. दोबारा बता रहा हूं, if I keep rotation per minute, अगर ये मिनट में, n is already in rpm, rotation per minute, this will be per minute. तो कैलकुलेट करो सर. व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन? इट इज 0.8. तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे सर. सो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.8. mass flow rate I don't know. v1 already, v1 is given. देखो v1 0.0767 and the swept volume is 1.5 into 10 power minus 3 into, is it 1.5? Yes. And the speed is 1600 rpm. And the speed is 1600 rpm. So everything is known except m dot. I want the unit of m dot. Anyone in the class, what is the unit of m dot? Class के बाद कुछ आपको देने वाला हूं. एक सेकंड. 1.5 into 1.29 आ रहा ना सर? है? गलत है क्या? (25.03) yes. 25.03 unit kg per minute. Why the answer is in kg per minute, sir? Because already this is rotation per minute, so we got the value. मित्रों, तो mass flow rate आ चुका है सर. Therefore m dot is equal to 25.03 kilogram per minute. But actually if you want the power in kilowatt, ध्यान से सुनो, if you want the power in kilowatt, mass flow rate should be kg per second. Already specific enthalpies are kilojoule per kg, so kilojoule per second is kilowatt. If you want the power in kilowatt, mass flow rate should be kg per second. तो इसको mass flow rate can be written as 25.03 by 60. So many kg. Minute means 60 second. तो कितना आ रहा है सर? 0.4172. ठीक है. पॉइंट मास रेट आया है, तो यहां पुट कर लेना सर. यहां पुट कर लेना. देखो, तो देयरफॉर द पावर इनपुट इज इक्वल टू m dot. What is m dot? 0.4172 into h2 minus h1. What is h2, sir? h2 is 222.6 given, and h1 is 183.2, and this will be in kilowatt. एक बार बताओ सर कितना आ रहा है सर? 222.6 16.4 आ रहा है क्या सर? Excellent, sir. So the power input is 16.4 kilowatt. Absolutely fine. Now he is asking RC, refrigeration capacity. What is the refrigeration capacity? And you know very well, mass flow rate आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे सर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. करेंगे सर?
So what is the refrigeration capacity? It is mass flow rate into RA. So refrigeration capacity is mass flow rate. What is RE? H1 minus H4. Okay, but H4 and H3 are same. But H4 and H3 are same. Why? Because 4 and 3 is throttling. Because H3 is equal to H4. ठीक है, sir. And RC is equal to M dot. What is M dot? 0.4172. H1. Already H1 is given 183.2 minus H4. What is H4, sir? H3, H4 are same. So it is 84.9. That is also given. So कितना आ रहा है, sir? So 41 na? I am getting this as 41 kilowatt, correct? Is it 41 kilowatt? Wonderful, sir. So can I calculate COP? The power is 16. He has not asked, but anyway, पूछा नहीं. तो कहाँ गया सर? एक सेकंड. क्या क्या पूछा है सर? Find the power rating. The power rating is 16 kilowatt. And what is the refrigeration effect in kilowatt? It is 41. So what will be the COP, sir? COP is RC by power input. RC is 41 and power input is 16 point something. So I can easily calculate, even though he has not asked, but anyway we are doing. Is it okay? Yes. ये करो question. Come on, come on. Yeah, complete this. Complete this. Answer दीजिए. I'm waiting for you. Come on. Come on, come on. Okay, okay. I'm waiting for your answers. It's a straightforward question. వెళితే గోదావరి అల్లుడుగా వెళ్ళాలి. See? Someone said see. क्या हो रहा है? What is the exact from compressor it moves to condenser. From condenser it moves to expansion valve. Throttle valve is also expansion valve. And then finally evaporator. What is the answer, sir? Such a simple question you are not giving answer. Compressor, condenser, expansion valve and evaporator. C is the right answer. ठीक है. ये करो. Straight question, sir. देखो. What is the COP of reversible refrigerator? Reversible means Carnot. Carnot means maximum. The COP of reversible refrigerator. Okay. Maximum COP, reversible COP or maximum COP. T lower by T higher minus T lower. So in the numerator it is 1. How can I get 1? तो इसको ऐसे करेंगे सर. TL बाहर ले लो. TL बाहर ले लो. It will be TH by TL minus 1. तो ये कट जाएगा. It will be 1 by TH by TL minus 1. Should be correct ना? I think option A is correct ना? Correct? हाँ जी सर. ये ले लो. ये करो. देखते हैं सर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. मस्त क्वेश्चन है सर. देखते हैं सर. 14th वाला. We'll see how many of you can answer to this.
ये वाला, these axes are not given, y axis and x axis, you have to identify. Someone said D. पीएच, सब लोग ए दिए, सब लोग ए दिए, आई मीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन एक्सेप्ट यश। यश भी ए दिया था पहले, फिर बाद में चेंज किया। जगदीश, इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े स्ट्रांग नहीं चल रहे। मैं बताता हूं सर, देखो एक बार, व्हाट इज 1 to 2 सर? इट इज रिवर्सिबल adiabatic compression, and this occurs in compressor. What is 2 to 3? It is constant pressure heat rejection, and 3 to 4 it is throttling, and 4 to 1 constant pressure heat absorption. Already we have seen the fundamentally we have seen this. एक बार देखना सर, कितना मुझे पता है 3 to 4 is throttling है। when 3 to 4 is throttling, on this axis something is constant, so ये enthalpy होना ही है सर, because when it is throttling, ध्यान से सुनो, throttling हो रहा है, 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 तो enthalpy is constant, means इस axis पे ये horizontal length same होना चाहिए, so this should be enthalpy, तो therefore ये तो चांस ही नहीं है सर, ये तो चांस ही नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज 2 to 3 प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। देखो एक बार, ये नीचे आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, क्या 2 to 3 देखो ऐसा हो के ऐसा आ रहा है, क्या ये कौन, अगर यहां पे प्रेशर होता है, इफ इट इज प्रेशर, इज इट कांस्टेंट सर? प्रेशर अगर है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, हाउ कैन इट बी कांस्टेंट प्रेशर? गलत सर, इफ दिस इज प्रेशर इट विल बी एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये प्रेशर लाइन है तो अगर कांस्टेंट प्रेशर यहां पे प्रेशर एक्सिस होता है, इट विल बी हॉरिजॉन्टल सर, इट विल बी हॉरिजॉन्टल। नहीं आया समझ में? इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, बट इनिशियली द प्रेशर देखो, अगर यहां पे प्रेशर है तो घट रहा है और कांस्टेंट है, सो बट ऑलरेडी यू नो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर, सो यहां का प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर होने के लिए, हाउ कैन दिस बी कांस्टेंट प्रेशर सर? इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, how can I take pressure? So how can I say this is a constant pressure? And if I take pressure on this, how can I say the pressure is constant? galat. So when it is rejecting heat, initially sensible cooling के कारण ये टेम्परेचर घट रहा है, उसके बाद फेस चेंज के लिए कांस्टेंट हो रहा है, सो देयरफॉर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो देयरफॉर इट इज टेम्परेचर। सो टीएच डायग्राम इज द राइट आंसर। आप डिसीव हो गए सर इस पे, यू गॉट डिसीव्ड, यस और नो? मित्रों बोलो, अच्छा क्वेश्चन था सर, ये करो। एक सेकंड, एक सेकंड, enters the compressor as saturated vapor and exits, okay, it leaves the condenser as saturated liquid, okay, come on, I want the answer sir। ये बहुत ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन है सर, अभी थोड़ी देर में आपको कुछ देने वाला हूं, सो जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम बैक, जस्ट गिव मी 1 minute।
चलिए चलो चलो, आई एम गिविंग यू समथिंग। आई एम ऑडिबल? सर क्या लक्ष्य जेई 3.0 बैच उन बच्चों की उम्मीद है? आई वांट टू डिस्कस विथ यू। इसके बाद लेट मी कंप्लीट। अभी आई थिंक देयर आर टू मोर क्वेश्चंस, आफ्टर दिस आई विल डिस्कस समथिंग विथ यू। क्योंकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया आपसे, आपके परफॉर्मेंस से। पेन कहाँ रखा रे? पेन कहाँ रखा मैं? है। चलो, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। आज का क्लास समझ में आया सर? देखो कैसे है, देखो। व्हेन आई वाज टेकिंग रेगुलर क्लास, कम लोग थे। जब मैं बोला एंड में कुछ दूंगा तब आए। मतलब आप सिर्फ लालच के लिए, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे सर। सैड। So let's take this question. A refrigerator operates on ideal VC cycle between, okay, कहाँ पे, यहाँ पे प्लेस नहीं है ना सर, तो यहीं पे कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। Uh, between pressure limits of 140 and 800. The lower pressure is 140 kilopascal and the higher pressure is 800 kilopascal. The working fluid is okay, refrigerant diya. The refrigerant enters the compressor as saturated vapor at 140. Matlab it is entering as saturated vapor and exits at 800. And here the temperature is also given. The temperature here is 60 degrees centigrade compressor exit. It leaves the condenser as saturated liquid. Yes, it is leaving the condenser as saturated liquid. The question is such a simple question. Ab batao. Can you tell me what is H1? H1 is equal to Hg at 140. 140 Hg is 239.19. I repeat, sir, what is H1? It is on G. So H1 is Hg at lower pressure 140. 140 पे Hg is 239. Okay. What is H2, sir? H2 क्या है? 800 kilopascal 60 degree centigrade. 800 kilopascal 60 degree centigrade. And the enthalpy is 296.82. Excellent, sir. Okay. And what is H3, sir? H3 is also equal to H4. So can I write H3 as HF? This is HF. HF at 800. So 800 pe HF 95.48. So he is asking COP such a simple question, but it is a regular customer. Refrigeration effect is H1 minus H3 or H4. H1 minus H3 or H4 by work input is H2 minus H1. So put karo. So COP will be equal to, it is refrigeration effect is 1 minus 4, correct, and work input is 2 minus 1, correct. So what is 1? 239.19 minus H4 is 95.48 by H2 minus H1, 296.82 minus H1 is 239.19. अब बताइए what is the value of COP? Anyone got the answer? मुझे तो नहीं आ रहा है रे। 296.82 minus 239.19. 2.49 ना?
और राउंड इट ऑफ बोला ना टू डेसिमल 2.49 या 2.50 लिख सकते सर. करेक्ट. करेक्ट सर. करेक्ट. यस. लास्ट क्वेश्चन. ये कंप्लीट करो फटाफट सर. यू कंप्लीट दिस. मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट. यू हैव टू डू इट सर. मैं कुछ नहीं करेगा. बॉल इज इन योर कोर्ट. यू हैव टू डू इट सर. अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं थोड़ी देर में और कुछ टाइम स्लॉट दूंगा. उसी टाइम स्लॉट में आप मुझे मैसेज करना है, तभी आपको नोट्स मिलेंगे. ठीक है सर. एंड वन मोर प्रॉमिस. आप ये नोट्स किसी से शेयर नहीं करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू शेयर विथ एनीवन. अभी तो आई विल शेयर. हाँ बोलो सर. व्हाट इज द लोअर प्रेशर सर? व्हाट इज द लोअर प्रेशर सर? लोअर वाला कितना है सर? लोअर वाला इज 60 किलो पास्कल. Upper is 5 bar. Oh my God. 1 bar is 100 kilopascal. 5 bar is 500 kilopascal. This is 500 kilopascal. Don't think that sir 5 कम है ना. No, it is in bar. समझ में आया सर सभी को? Yes. Yes. और क्या बोला है सर? The enthalpy at the compressor exit. So directly the compressor exit enthalpy is given. H2 is given. What is H2? The enthalpy at the compressor exit is 267.98. Excellent, sir. And the other relevant data are also given. H2. Okay. Can you tell me what is H1? Can I write H1 as H1 as Hg at 60 kilopascal? 60 kilopascal means ये तो kilopascal में दिया सर. This is so many kilopascal. 60 kilopascal is also 0.6 bar and 5 bar. This is 500 kilopascal. याद रखना सर. 60 kilopascal. 1 bar is 100 kilopascal. 1 bar is 100 kilopascal. 1 kilopascal is divided with 100. तो 60 kilopascal को 100 से डिवाइड करेंगे तो बार में आएगा. So these pressures are given in bar. ध्यान से सुनो. This is bar. ठीक है. क्या है सर? H1 is equal to Hg at 60 kilopascal, which is also 0.6 bar. So 0.6 bar is this column, and I want Hg, this Hg. Hg at 0.6. So can I write this as H1 is Hg at 0.6. This is 0.6. This column is 0.6. This is 5 bar. Hg at 0.6, 224.72. 224.72 is H1. ठीक है. H2 is given. What is H3, sir? Which is also H4 because 3 4. What is H3? H3 is HF at, it is on F. HF at 500 kilopascal. At 500 kilopascal, which is also 5 bar. So you have to go for a 5 bar column and you have to find out HF. That will be H3. So HF is this. HF is this first wala. This is HF at 5 bar, 71.33. 71.33. Correct ना? Is it correct, dear students? Yes. अब देखो, what is COP, sir? He is asking COP ना. COP is H1 minus H4 by H2 minus H1. So therefore, H1 कितना है, sir? Put the value. H1 is 224.72 minus H4 is 71.33 by H2 minus H1. 267.98 minus H1 is 224.72. 224.72 minus 71.33 by 267.98 minus 224.72. I think 3.54, na? Absolutely correct. 3.546 or 3.55 should be correct. Correct. The last one, same question. देखो, there are two things in the same question.
इसका ही डेटा है सर। ये तो हो गया शायद 16 हो गया, हो गया, ओवर 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 ओवर। सो आज का क्लास समझ में आया सर? एंड टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू टॉपिक, डिस्कनेक्टेड टॉपिक। देखो आज जो हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ RAC, साइक्रोमेट्री, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइक्रोमेट्री विच इज नथिंग बट एयर कंडीशनिंग का पार्ट है सर, साइक्रोमेट्री। तो हैव यू अंडरस्टूड टुडेस क्लास? देखो आपके लिए ना अच्छा कंटेंट दिए तो कोई भी नहीं आते। ठीक है सर। नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग। थोड़ा मैं बैठ के आपसे बात करूंगा, आराम से बैठ के बात करूंगा। आई वांट टू डिस्कस विथ यू पीपल। थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, ओके ना? नाउ सिंसियरली अभी क्या टाइम हो रहा है? आज का क्वेश्चन मजा आया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, you will be learning, Mr. Jagdish, but let me complete first because we have also some constraint. वो सब keeping in mind miscellaneous topics, मतलब इसी के पार्ट में I'll do it. Okay? आज का क्वेश्चन बता। देखो now 12:48 मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, उसी टाइम स्लॉट में अब देखो मेरे tomorrow's topic is psychrometry. Psychrometry कल का टॉपिक, this is tomorrow's topic. सुनने में आया कि आज कुछ एग्जाम था इसलिए बच्चे नहीं आए। चलो कल वेट करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इधर देखो सर, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखना, मैं आराम से बैठ के बताऊंगा आपको। इधर देखो, क्या क्या दे रहा हूं अभी। कुछ टाइम दूंगा, उसी टाइम में अगर मैसेजेस आए तभी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं। ये मैसेज टाइप करके व्हाट्सएप पे, ये मैसेज टाइप करके आप मुझे इस नंबर पे करना। देखो कल करेंगे परसों करेंगे तो नहीं, अभी के अभी तभी मैं भेज दूंगा। और जो आज कुछ एग्जाम लिखे, शायद आज कुछ एग्जाम लिखे, वो लोग भेज सकते, लेकिन सिंसियर दिल पे हाथ रखे, सर टुडे आई पेड एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू राइट अटेंड लाइव, काइंडली शेयर मी नोट्स। तो क्रैश कोर्स ये लिखना है आपको, ये लिख के ये मैसेज लिखना है, ये मैसेज लिख के यहाँ पे भेजो, मैं नोट्स भेजूंगा। लेकिन ये मैसेज लिख के अभी भेजो, नहीं दिख रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, समझ गए सर जी, समझ गए सर जी। आई अंडरस्टूड, डोंट वरी, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। And I should receive messages in just, I should receive messages in just 12:55 तक मिलना चाहिए सर, 12:55 तक मिलना चाहिए। आई एम वेटिंग। इसके साथ साथ जो सिंसियर है उनके लिए, आई रिपीट सर, इसके साथ साथ जो सिंसियर है
उनके लिए कुछ मैं अपने क्वेश्चंस भी दूंगा सर। आई एम वेटिंग। अप टू 12:55 तक रिसीव करूंगा सर। अभी तक मेरे पास कितने मैसेजेस है मैं देखूंगा। टिल नाउ हाउ मेनी मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड, आई विल चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली 11। चलो कोई बात नहीं सर, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। हो गया? यस यस, हो गया सर। एंड टुमारो आई विल स्टार्ट, एंड प्लीज नोट डाउन दैट आई एम स्टार्टिंग मैथ्स ऑल्सो। सून आई विल बी स्टार्टिंग मैथ्स, इंडस्ट्रियल मैथ्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इनिशियली एज प्रॉमिस्ड हीट ट्रांसफर मैं नहीं ले सकता हूं बिकॉज लोड ज्यादा हो गया था, इसलिए आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक। तो मैं इंडस्ट्रियल और मैथमेटिक्स ले लूंगा इसके साथ साथ। ओके, शैल आई एंड द सेशन सर? ओके, say something if you want to say something you can. अभी मैं क्लास के बाद आपको थोड़ी देर में नोट्स भेजूंगा आपको। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर नोट्स, जो मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा है उनके लिए तो अच्छा ही होगा डेफिनेटली। टुडे सेशन इज वेरी गुड सर जगदीश, थैंक यू थैंक यू। नो, आई ऑलवेज बिलीव इन कंटेंट, प्योर कंटेंट। तो कल का क्लास आई विल सी दैट इट विल बी मच मोर गुड। ओके, सो देखो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, एक सेकंड सर। देखिए सर जी, मेरा प्लान है कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ लाइक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये क्रैश कोर्स के बाद आई विल बी कमिंग अप विथ कंप्लीट न्यू क्वेश्चंस ऑन थर्मो, फ्लूइड, HMT, SOM, TOM, then mathematics, then aptitude. I'll be coming up with these questions. Will it be okay, sir? कुछ brand new questions for GATE. All this for GATE. No wastage of time, सिर्फ class. So, do you want any suggestions? Like, can you suggest, like, I mean, sorry, can you suggest, like, for any further improvements? Yes, yes, yes. Sorry. MD material science is also included. I'm really sorry. MD material science. Absolutely. हाँ चल, वाइब्रेशन भी ले लेंगे, क्या टेंशन है वाइब। यस यस, बिकॉज आई टॉट ऑल दिस। तो आप बताइए सर, एनी सजेशंस? क्लास के बाद सब लोगों को कमेंट करना है कि कैसा लगा क्लास। आई वांट दैट बिकॉज दैट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। स्टिंग टू प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूँ ना सर, आई एम स्टार्टिंग ऑन प्लस।
प्लीज आफ्टर द क्लास आपके जो सजेशंस है, आगे कुछ मेरे से क्या कोर्सेस चाहिए, वो आप इस कमेंट्स में डाल सकते हैं सर। ओके, क्लास के बाद क्लास कैसा था? यस सर टॉम, ठीक है, टेक एनी प्रोडक्शन सब्जेक्ट सर प्लीज। बिल्कुल ले लूंगा सर, बिल्कुल ले लूंगा। सो अगर आप परमिशन दोगे तो आई एंड द सेशन। आप, आई एम आस्किंग यू, आर देयर एनी लाइक, इज देयर एनी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। आप कुछ सजेशन देंगे तो वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर यू। अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू क्लास टुडे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Expectations, I didn't get you. What is expectation? Expected basic thumb. Yes, classic way में I will complete. Let, अब दिसंबर से वही करूंगा ना रे, why do you worry? Classic way में, classic way में, with little, in a little time, complete theory and numericals. Okay, absolutely. Okay. तो अब मैं नहीं बताऊंगा, डेली 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 माई क्लासेस ऑन यूट्यूब विल बी, डेली इट विल बी from every time I'll not remind you, daily 10:30 a.m. So tomorrow it will be psychrometry. देखो, daily my classes, my YouTube classes will be from 10:30 a.m. Okay, daily it will be from 10:30 a.m. and tomorrow it is a brand new topic, that is psychrometry. ठीक है सर, आज का क्लास मस्त हुआ, सो हैप्पी फॉर यू सर। एट द कैन आई हैव वन कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन? एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ब्रिजेश ने कुछ अच्छा आइडिया दिया सर, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि सर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस ऐड कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, न्यूमेरिकल थ्योरी आप सेपरेट नहीं कर सकते सर, यू कैनॉट, बिकॉज आई विल गिव यू, yes, I'll be teaching FM, but not in this crash course, but YouTube पे पढ़ाऊंगा after this. Okay, definitely, because I have made some very new questions on all subjects, specially reserved for GATE 2026 candidates, specially reserved. Okay, चलो फिर आज के लिए बस इतना। I'll be sharing PDF to those candidates who have messaged me. Okay, चलो bye bye, thank you. I'm ending the session, sir. कल 10:30 पे मिलेंगे, bye bye.